नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट अ पॉक्सो एक्ट केस विच इज इन न्यूज बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट पर्ल वी पुरी। नाउ पर्ल वी पुरी इज अ टेलीविजन एक्टर। इनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट रजिस्टर किया गया है। चार्जेस आर दैट ही रेप्ड अ माइनर। द चार्जेस हैव बीन लेविड अगेंस्ट हिम बाय द फादर ऑफ द माइनर. The mother of the minor and the father of the minor are having custody battle, and in that battle obviously the child is being subjected to such kind of harshness of life because यहाँ पर wife कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और she is trying to say subtly that Pearl V. Puri is being framed by her husband because he wants custody battle of the child and he wants to prove in the court that working mothers cannot take care of their child because her child used to travel with her when she was shooting for the serial in 2019. नाउ पर्ल वी पुरी के सपोर्ट में बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स आए हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है. आई हैव नॉट वर्कड विद हिम. Ekta Kapoor has come in support of him because apparently he is doing Nagin show of hers, and Nagin is a show which is a show which gets a lot of TRP on television. एकता कपूर का एक ऑडियो नोट भी आया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वेयर शी इज टॉकिंग टू द मदर एंड टेलिंग हर दैट इट इज बैड कर्मा दैट यू लेट समथिंग लाइक दिस पास अवे एंड नॉट टॉक अबाउट इट, बट that is the mother of the minor is saying, and the wife of the husband who has filed these charges against Pearl V. Puri is saying that she has a custody battle going on and the case is sub judice and she respects the judiciary and so she will not make any comment on this case, but uska audio with Ekta Kapoor has leaked out. तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बिकॉज दिव्या खोसला कुमार हैज ऑल्सो कम इन सपोर्ट ऑफ पर्ल वी पुरी. आई बिलीव दैट पर्ल वी हैज अ राइट टू पुट हिज साइड ऑफ द स्टोरी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. ही हैज अ राइट टू फाइट फॉर हिज इनोसेंस. यहाँ पर दिव्या खोसला कुमार ने कहा है कि हिज फादर इज नो मोर एंड हिज मदर इज हैविंग अ life threatening disease and she's crying every 15 minutes, and I can understand if something like this happens to somebody what goes on with the family members, because when I was arrested I think my mother cried every minute and she did not know what was happening. मैं तो जेल में खाली 30 घंटे के लिए थी, मुझे बेल मिल गई उसके बाद. But Pearl V. Puri has been arrested under POCSO Act, so obviously his bail is going to take some time. I have not followed up the case, but I just got this news and I'm making this video because I just want to say that if Pearl V. Puri is innocent and he is being framed, then he has the right to represent his innocence. He has a right to fight for himself, and that right should be given to him. Just because he is a male and the minor's father has filed this complaint, you cannot accept it as the gospel truth. You cannot expect it to be the final word in this case. यहाँ पर पर्ल वी पुरी को बेल मिलनी चाहिए, पर अगर पर्ल वी पुरी को बेल मिलती है तो आसाराम बापू को भी बेल मिलनी चाहिए. आई एम वेरी क्लियर इन माई थॉट प्रोसेस बिकॉज आई बिलीव दैट पॉक्सो एक्ट में जो भी पुरुष गिरफ्तार होते हैं दे शुड गेट बेल एंड दे शुड बी गिवन द राइट टू फाइट फॉर देयर इनोसेंस. आई अंडरस्टैंड यहाँ पर बहुत सारे एक्चुअल जेन्युइन परवर्ट्स भी होते हैं जो ये गलत काम करते हैं, सो वी कैन नॉट जनरलाइज every situation, but looking at case based situations we need to make decisions. और यहाँ पर पर्ल वी पुरी के ऊपर जो केस डाला है उसके आधार पर I believe that he should be given a chance to prove his innocence whatever the law can allow him. दूसरी ओर if Pearl V. Puri gets a chance to prove his innocence and gets a bail for that, I think Asaram Bapu deserves a bail much earlier than that because he has been in jail for so many years. So यहाँ पर because I support gender equality, I am going to be siding gender equality. I am not siding Pearl V. Puri, nor am I saying that the charges against him are false. मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, let the truth prevail, but for the truth to prevail you need to give both sides the rights to represent their storyboard and for the court of India to decide what is correct and what is wrong. Namaste, Jai Hind.